I have somebody really special who I have invited for that gentleman to come and share his experiences with all of you on what he has done. So, Alok, are you here? Yes, sir, I'm here, sir. Very nice. Good Morning, everyone. morning. So, ladies and gentlemen, can we all welcome Alok Parakh, please? Good morning, Alok. Morning. Morning, Alok. Welcome, Alok ji. Hello. Morning, good morning, Alok. Good morning, Alok ji. Welcome, sir. Good morning, Alok ji. Morning, Alok ji. वेरी नाइस. थोड़ा अच्छा सा शानदार सा वेलकम दो. किसी दिन आपको भी मिलेगा ऐसे पिटा हुआ वेलकम चाहिए क्या? Welcome, Morning, Alok ji. Welcome. Smile morning, Alok ji. Welcome. Morning, Alok ji. Welcome. Good morning and happy new year, Alok ji. Welcome, Alok ji. Very nice. So Welcome, Alok ji. very nice. Okay, so now Alok, why don't you unmute yourself and why don't you share your experience? Alok, you'll have to unmute yourself. Yeah, I've unmuted myself, sir. Okay, Alok. So why don't you tell us about yourself? What do you do? What's your business? So on and so forth. So normally I am at the other end with the rest of the batch, so it's a little awkward today that I'm not doing the talking. Actually, I hail from a company called National Plastics Group. We are based out of Chennai, completed 75 years in the industry. And we have two major verticals. One is industrial moldings and second one is packaging. So we are two brothers. So I run the packaging vertical and my brother runs the industrial moldings vertical. I have a small presentation which I made actually for YPO. Although it's very basic and elementary, you guys are already quite advanced in where you've reached in the course. But in any case, I spoke to Rahul and he said, go ahead and just show it. Very nice. Very Sharing the presentation, sir. So truly, BMP actually has been my journey to liberation. My brother actually. ये presentation आपने YPO के लिए बनाया था? Yes, sir. Yes, sir. Very good. Excellent. So my brother actually did the program. He's younger than me by 5 years. He did it in 2015. And every year, every time in the last, so many years, he has been nudging me, go ahead, do it, go ahead, do it. He used to talk to me about all the things that he has done. But somehow I kept on postponing. I thought, we run a very professional organization and how much, I can implement by seeing him and all that I was thinking. And I had too many issues, responsibilities occupying my mind space. Of course, the problems that I was facing personally was that the packaging business was making very meager profits, losses. We lost our way actually in those 3-4 years. And personally, I lost my self-confidence and self-belief. I've joined business in 98, so it's almost now more than 25 years I've been working. But there was a journey of time of my life where I thought, I don't think I can do this. I can make it a successful business. So there were a couple of offers also from my competitors, one of the multinational companies and one domestic. So almost on the verge of signing, and then BMP happened. So why don't you shut this PPT and why don't you just read it out yourself? I mean, because you know it, you're reading it, you have it in front of you. You don't have to show it to these people. And what's your, just a sec, where are you? What's your business like? And how many factories do you have? What's your turnover? We have around 14 plants across India. Primarily, we set up plants close to our customers. So OEMs, for example, TVS Motors, Hyundai, Kia, we have plants right next to them. And beverages, of course, we are located in North, West and South India. So we have overall 14 plants. This year, we thought we will reach 1,000 crores, but we are close. So hopefully we should cross that number next year. Very nice. Very nice. Okay. So what were the challenges you had? The biggest challenge, of course, was losses. That was the number one big challenge. And of course, as you've been repeatedly saying, the number one job of management is to double the profits or grow the profits of the organization. And that was something I was not able to do.
I always felt that there's a huge shortage of customers. There's an excess capacity in the industry, but I think the bigger issue was that I didn't know how to get work done from employees. And it was extremely control centric kind of a business where everything used to come to my desk. And also very early in the program itself, I realized that the best place to destroy my time was office. And to a large extent, I was doing management by abdication, which I thought was actually professionalizing the business, but it was not. I was actually handing over responsibilities to HODs and my staff and lost touch or control of whatever was going on. So how many HODs did you have? और how many 14 प्लांट थे तो 14 प्लांट हेड थे आपके? Yes, 14 plant heads. Then and then of course head office has 6 CXOs in multiple verticals. CXOs like finance, accounts, sales and marketing. So these are all senior, very senior management in every vertical or every domain. So, but somehow, although people are quite happy working for us and they've been with us for so many years, but somehow that satisfaction was not coming, as if we were only running for the banks. Only feeding the banks and just making them earn money, and we were not getting anything at the end of the day. So that was the frustration that was building up over the years. And is there any I lost that confidence that is there any way that we will actually make money in this business? Does anyone actually do it? So that was a big question mark that was continuously popping up. Very nice. So when you joined, finally, what made you join? Because आपके भाई ने तो 5-6 साल पहले किया हुआ है और उसके बाद आप करना नहीं चाह रहे थे क्योंकि आपको लग रहा था आप वैसी तोपो. आपने इतने बड़े CFO, CEO, COO, मतलब इतने बड़े लोग लगा रखे हैं, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है. तो but finally, what made you join? So I think it's the inner voice. I would say I listened to my inner voice that it's not right to exit. I think I should give it a shot. I don't know, something struck inside me during COVID that this is the best thing that can happen to me now, and I want to do it. And that's how I joined your program. And I think we are the first COVID, I would say, online batch of your course. Very nice, very nice. Okay, then what happened? How was your experience? Kya kiya? So during the workshop, I loved every moment of it. It's like one of the most memorable 9 months I've had. I literally ate, breathed, lived BMP for 9 months. Of course, there was constant FOMO, seeing others giving presentations. I was thinking that, are we really there? But then it did inspire us to do, a lot better than, and it gave ideas. And every day I used to come back and work with my team. And luckily, I had a very good team during that period who really helped me convert all my vision into reality. And of course, I followed one simple norm, which is called KISS, that is keep it simple and stupid. All my systems are very simple and very easy, anyone can understand them. And of course, I hired quite a lot of people in that 9 months, completely created a new office itself calling it MDO. And most of them are still there, even after 3 years, they're still very much working for me. Okay, so what are the things you implemented? Now you can perhaps show some of your slides and let's just go through it fast. So most of it is just the basic ones, I think everybody has done it already. So one is, of course, the biggest thing I did was hire my EA. So is everybody able to see the slides? No, abhi nahi. Oh, just a sec, sorry, I'll just share it. उसमें critical points बता देना, because we've all got some of that done already. So of course, the first thing, hired a EA and she's unbelievable. Apart from just doing my daily routine tasks and calendar and everything, she is running the organization. She is managing the MDO for me. So that is a very huge benefit I've got. Second was batching. I've started respecting my time, of course, after that, and everybody in the organization respects my time just because of this one thing, that is batching. Everything happens on Monday only. No other day I do operational work. None of the other 6 days of the week, 5 days of the week. So Monday is the day all jhadu poncha, as you call it, is done and cleared. Then scheduling, I have still, after 3 years, I'm very much following it, not missed a single day. And every day evening, I feel accomplished. I don't feel I'm busy. I feel as if I've achieved something today. And so you're still doing your scheduling good, well? Yes, sir. It's going on very well.
And even now, whatever I don't schedule does not happen. That is how it works even now, sir. That's very, very clear. So this is something, it's become like a routine for me, and I don't miss it at all at any cost. Very nice. Then created my financial summary sheet, GP. I don't know how to I'll show you my GP sheet. How does it look? You have the GP analysis. You can click it. I think you have a link there. Let's stop sharing. So this is our, we created like most of you have done already, I guess. We have created our own portal. Everything is here on the homepage, as you can see. All my, actually, even I have a system creation team, so a lot of things are new for me also today when I'm seeing them. When Rahul got me yesterday, then I started going through all this. So A lot of things are new for you also. so typically the GP analysis, where is it? Where is it? Never mind the GP analysis. Let's go through some of these sheets. Yes, sir. So one is, of course, this is something unique I started. This called MD approval sheet. So now all the MD approvals come to me through the FMS only, and then they come on Telegram. So this is how typically they look, sir, on the Telegram. This message. So I just click a button on Telegram. So and I can also analyze in the MD approval sheet what is my total time I'm wasting on approvals. So which person asked me? You said time wasting. Yes, sir. I think giving approvals is a waste of time. And that is something I'm working on, how to further delegate that also. So I know these are the people who ask me approvals, and this is a category of approvals that normally I'm doing still. And so I'm working on this, how to cut it down further. So you also have listed down kitni approval de rahe ho aap. Very good. Yes, sir. These are the typical approvals, and I can see from which date to which date, all those filtering options are there. The second one is, of course, the GP sheet that as you said, my top GP customers, my low GP customers, and all the kind of filtering, whatever I want, I'm able to do. In this, then we also have the product-wise, then customer-wise, segment-wise, all that GP is there. So I'm able to analyze that, and every Tuesday we do this when the sales meeting happens, and we are actually eliminating. Before the ASP program, I had probably 8-9 customers. Today we have more than 100. So this sheet is actually now really is giving some sort of meat is there in the sheet, where we can actually proudly say that yes, we are removing low GP and we are adding new GP. We are not having customer concentration anymore. We are having, we don't work more than 10 to 15% of our turnover with any one single customer. So all that was the result of the ASP program. Very nice. Ye kya hai? So this is the production. You had asked me to present the production also. So this is how typically we analyze our production. It's like, for example, packaging. So a lot of losses we were facing earlier, which we did not realize why. So now with data, we are able to see exactly one simple thing like a cavity block in an injection mold has caused us a loss of output of almost 84 lakhs in my Silvassa plant in last year alone. So now the focus is only on how to avoid cavity block. That's the one thing that we are following. So this itself will add capacity indirectly to us. And the daily dashboards anyway come. And this is my yesterday's or day before yesterday's report. So whatever I want to see is there on one. All this comes on the plant, and everything in plant is online now. We don't have any papers in the Can plant. you show us the basic? And you're saying आपके 14 के 14 plant सब पे PMS लगा हुआ है. Yes, so I handle the packaging. So I've done for my packaging units. Ariyant is probably doing differently on his automotive. आपके packaging के कितने plants हैं? Right now 3 plants. Sir. तो आपके 3 plant हैं. हाँ. तो जो पैकेजिंग का काम आपका पूरा हो रहा है. Yes. Very nice. So ये तीनों प्लांट पे पूरा का पूरा PMS चल रहा है. Yes, sir. PMS is running. My PMS and IMS are linked to each other. So we use IMS to do PMS. That is how we are doing currently. मतलब समझाओ जरा. We do IMS to do PMS. So this is our IMS sheet. Typically the same format that you gave.
So we have fixed the various things like the max level, the minimum batch size, the reorder level, and we've also divided into two categories. One is make to stock and make to order. So what I'll just typically show you how we do. First, I'll तो आपका दोनों है, मेड टू स्टॉक भी है, मेड टू ऑर्डर भी है? हाँ, दोनों है। अच्छा, हिंदी में बात कर सकते हैं आलोक के? नहीं, बिकॉज आप चेन्नई से हो। हाँ सर, आई कैन स्पीक इन हिंदी में बात कर लेता हूँ। हिंदी में बात करो। तो इसमें जैसे प्लानर है, तो प्लानर में वी हैव डन अ लॉट ऑफ बैक एंड कोडिंग। सो इसमें प्रोडक्शन क्लिक करता हूँ, सो इट विल एक्चुअली ऑटोमेटिकली जनरेट माय प्रोडक्शन प्लान बेस्ड ऑन द करंट स्टॉक, बेस्ड ऑन व्हिच मशीन दैट प्रोडक्ट कैन रन, एंड बेस्ड ऑन द मिनिमम बैच साइज. It will also tell me number of shifts I need to run that particular product. So this in every day morning we are able to do this, and then based on the production planning, next we हम लोग full kitting करते हैं. So full kitting also I run a script, and it will do the entire for that production. वो production plan के लिए पूरा full kitting it tells us that what is there, what is not there. So then also उसके बाद में we can also do the procurement planning. So I'll clear the procurement, and then we run the procurement planning. तो इस पूरा जो procurement करना है based on the stock levels today, it automatically generates the plan. So based on this ये plan के basis पे, then we go to the PMS. This is our PMS. So here we enter based on the number of shifts or which quantity machine, which product. We just enter one cell, and then I just clicked on autofill, and it asks पूछता कितने shifts आपको चलाना है. Say I put 11 shifts, and अपने आप वो भर जाता है. And this is directly linked to the shop floor में the shift in charge is able to see. Now no HODs are involved in the entire process. The planning team does it here, और shift in charge वहाँ shop floor पे देख लेता है, and then based on this he runs the machines. Of course after ये सारा का सारा आपने वर्कशॉप में ही बनाया था, मतलब जो टेक्नोलॉजी everything was in the वो 9 महीनों में ही किया सर. उसके बाद में आपने बोला पाप है, सिस्टम्स के ऊपर काम करना पाप है, तो आई हैव नॉट उसके बाद में कुछ ज्यादा कुछ किया नहीं है. जो भी किया उस 9 महीने किया, और इसीलिए हुआ है सर, बाद में होता भी नहीं चाहिए. वो पूछ रहे हैं ऐसा अपना भी हो जाएगा क्या? सर सबका होएगा 100%. मेरा अगर हो सकता था, आई एम श्योर सबका हो सकता है. कल पता है मेरे को क्या बोला आलोक ने बोला सर मैं अपना सिस्टम दिखाऊं क्या? मेरा बहुत ज्यादा सिंपल सा सिस्टम है, दिखाने लायक नहीं है. Alok, do you have the chat box on? No sir, I don't have to. I'll just open it now. Yes sir, I am seeing it. I have not seen any of the chat. अभी खोला है. So ये देखो क्या बोल रहे हैं सब. तुम बोल रहे हो तुम्हारा इतना सिंपल सा सिस्टम है, दिखाने लायक भी नहीं है. So, but मुझे कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगा. जो डेली के कॉन्सेप्ट्स हैं, with just that I had a very good MIS DME who helped me convert all my concepts to reality and use your आपका जो philosophy है, आपका जो guidance है, based on that I could just achieve whatever you said. मैंने कुछ भी dilute नहीं किया है. आपने जैसे बोला वैसे का वैसे I have just copy pasted into my organization's method or my product method of working. तो ये सारा का सारा आपका पूरा प्रोडक्शन प्लान यहीं से निकल आता है इससे. हाँ एंड देन फिर उसके बाद में प्रोडक्शन एनालिसिस तो होता ही है सर डेली. तो ये एक्चुअली आपका ना अभी आपको पहले बेसिक होगा, उसके बाद इसके बाद विल गिव यू ये सारे टूल्स आपको दे देंगे बाद में, बट पहले आप बेसिक शीट पे तो उतारो. आलोक, व्हाट वाज योर जर्नी ऑफ मेकिंग द पीएमएस? सर पीएमएस बहुत सिंपल नहीं था, बिकॉज उसमें आई हैड टू स्पेंड क्वाइट अ बिट ऑफ टाइम ऑन द शॉप फ्लोर एंड रीलुक एट प्रोसेस के कैसे होता है शुरू से, अगेन फ्रॉम द टाइम द रॉ मटेरियल एंटर्स द प्लांट, हाउ मच टू प्रोड्यूस, व्हाट इज द होल्ड स्टॉक्स, व्हाट इज द नॉन मूविंग स्टॉक्स. फिर मतलब उसमें और ऑटोमेट, आपने बोला था ऑटोमेट इंटेलिजेंस. सो दैट इज समथिंग आई डिडंट वांट अ ह्यूमन डिसीजन मेकिंग इन पीएमएस. I wanted to automate the intelligence. So that is why coding थोड़ा और करना पड़ा कि even after जैसे human brain thinks and decides how much production we should do, keeping all the constraints in mind. So वैसे ही I had kept on working with my DME to keep on improving the code, and final result that comes कि इतना production plan करना है. So that almost matches how if I had done it myself, it almost matches that. Then now only the machine does it, in the sense that it's machine learning. It's just the code that creates the production line. I don't allow any individual to decide कि आज इतना बना लो.
तो बनाने का भी डिसीजन कैसे होता है? तो आपने कितना टाइम लगाया था पीएमएस में? So I think around that was 4 to 5 weeks. I think it took 5 से 6 हफ्ते लगे सर उसको पूरा to reach this point. So I think you're muted. डेडिकेटेडली 4-5 हफ्ते? हाँ हाँ सर. मतलब फुल आप घुस गए थे इसमें? तो लकीली उस टाइम मेरे पास कुछ बैकलॉग नहीं था. आपका जो भी आपने बोला ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो रहा था हर हफ्ते. तो आई कुड फोकस ओनली ऑन पीएमएस इन दोस 4-5 weeks. वेरी नाइस. ओके, तो अब ये पीएमएस अपने आप चलता है? हाँ सर, अब पीएमएस अपने आप चलता है. आपको करने की जरूरत नहीं है? नहीं. सो एक बार वापस जस्ट रन अस थ्रू द प्रोसेस ऑफ अभी पीएमएस कैसे चल रहा है? पीएमएस ऑटोमेटेड है सब. अभी जैसे इसमें आ जाता है पूरा प्रोडक्शन प्लान. ये प्रोडक्शन प्लान के बेसिस पे उसमें एंट्री हो जाती है. एंड देन इफ यू सी द स्टॉक्स वी आर एबल टू मेंटेन. एक्चुअली रेड्स आर द प्रॉब्लम राइट नाउ बिकॉज वी डोंट हैव कैपेसिटी एंड दैट इज प्योरली बिकॉज ऑफ एएसपी. तो दिस ईयर इज गोइंग टू बी आवर मैक्सिमम कैपेक्स. इतना बड़ा कैपेक्स एक साल में कभी नहीं किया है. So this is going to be the biggest expansion that I'm doing, and a little bit nervous about it. But all the 3 locations of my plants, we are expanding capacity. But because of payments, you can see most of them are red. Green. Or red is purely because of we don't have capacity. तो आपकी जो टर्नओवर है वो कितनी बड़ी थी? कहां से कहां हो गई थी? So 2020 we were 196 crores, just the packaging business, and then we reached. In 2019 we were 196. We reached 300 immediately during BMP, and then this year we will be doing around 400. So we should cross 400. You were at 196 and now you'll do 400 crores. Yes sir. Really nice. It's too much gratitude to you. I don't have, I mean, all your students say so many things, so I don't have anything new to add. But then of course it's too much of gratitude to you. I only think about you every day when I see this happening. Thank you जी, thank you, very nice. Okay, so ये क्या है? मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये क्या है. So, आप एक काम करो, बेसिक वाली शीट्स दिखा दो. ये तो आपने थोड़ी सी एडवांस शीट्स दिखा दी हैं. नहीं सब आपने मेंटेनेंस का बोला था, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस. आई हैड ओपनड. एक मिनट, तो आईएमएस से आप पीएमएस से लिंक की हुई है, मतलब क्या होता है कि आईएमएस में जो माल कैसे लिंक कैसे होता है, मेरे को एक बार समझाओ. तब आईएमएस ही डिसाइड करता है कि प्रोडक्शन कितना करना है. नो ह्यूमन डिसाइड्स. सो इन आईएमएस वी रन द प्रोडक्शन प्लान, और जितना आईएमएस बोलता है उतना ही शिफ्ट वो मशीन वो प्रोडक्ट चलता है. और देन दैट स्टॉक कम्स बैक टू आईएमएस. सो देन आईएमएस अगेन बिकम्स ग्रीन or whatever based on the stock levels and the sales that is happening. आईएमएस बताता है कि प्रोडक्शन में क्या जाना है. हाँ, प्रोडक्शन कितना करना चाहिए आईएमएस बताता है हमको. Because IMS में I fixed all the important points, जैसे max level, minimum batch size, non-moving stocks क्या है, off season, जैसे हमारा peak season Jan to June होता है, off season July to December होता है. तो all those things I have put the coding in IMS. So then the IMS correctly tells me based on. तो अभी इस साल मेरा जैसे non-moving stocks hardly कुछ थे because of the IMS. और पहले कितना था? पहले तो हर एसकेयू में कुछ ना कुछ रह ही जाता था. आफ्टर द सीजन इज ओवर, जुलाई में इतना हालत खराब हो जाती थी कि अब ये बारिश चालू हो गई, अब माल कैसे बिकेगा. हर एसकेयू में रहता था. अब वी आर एबल टू रियल टाइम मॉनिटर व्हाट्स गोइंग ऑन, सी द sales, how the sales are moving. And IMS is actually because if some product is selling more, IMS अपने आप उसको बोल देता है कि आप ज्यादा बनाओ. So that is the intelligence that is linked in the IMS to my production. अपना जो एमआईएस का लड़का था वो अच्छा चुना था और उसको पकड़ के उसके साथ ये सारी की सारी काम करवा लिया था अपने साथ, और इसको सारा का सारा जो नॉर्मल सानिध्य की क्लास थी उसी से करवाया सारा. हाँ सर, whatever सानिध्य concept he gave us, जो उन्होंने दिया, we only built on that. We used the base what उन्होंने जो दिया था, and then my DME was definitely very good in AppScript. He was very good in coding, so JavaScript. So he could do much better than what or just convert my vision into reality. Very nice, excellent, very very good. Okay, तो जो IMS है, IMS के बेसिस पे आपका PMS चलता है. Now go back to the dashboard. आप अभी भी मॉनिटर करते हो, कितना टाइम लगाते हो इस पे अब? So अब मैं एक्चुअली बहुत दिन बाद में आज देख रहा हूँ प्रोडक्शन डैशबोर्ड. एक टाइम में तो रोज देखता था, बट आजकल मेरे पीसीज देखते हैं. आई डोंट इवन सी द प्रोडक्शन डैशबोर्ड. तो अभी आप प्रोडक्शन प्लान देखते भी नहीं हो? नहीं, मैं देखता भी नहीं हूँ, और पूरा मेरी 3 पीसीज ही चला रही है कंपनी.
They are handling a turnover of 400 crores, all three pieces. Now I'm taking a fourth one also. अभी चौथी join कर रही है. But they are running the, and उनको every Tuesday I meet them for 1 hour, 1 to 2 hours. तो उसमें सब डिस्कस हो जाता है, उनको कुछ भी चैलेंजेस हो और इफ दे आर फेसिंग एनी प्रोडक्शन रिलेटेड इश्यूज, दे आर नॉट एबल टू, कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है उनको, और एनी प्रॉब्लम दे आर फेसिंग, किसी से इंडिविजुअल्स दे आर फेसिंग एनी इश्यू, सो ऑल दोस थिंग्स आई, एवरीथिंग आई लिसन टू देम ऑन ट्यूसडे. बस 1 घंटा आप बैठते हो उनके साथ और ये पूरी कंपनी चला लेती है? हाँ सर, पूरा एवरीथिंग इज ऑन फॉर मी, नॉट अ सिंगल, इवन अ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू द बैंक or compliance of any government statutory thing or each and everything is on system, and each and everything PC is aware. ये सारा मतलब गवर्नमेंट कंप्लायंस, स्टैट्यूटरी कंप्लायंस, इंटरेस्ट विंटरेस्ट सब वो सब कर रहे हैं? हाँ सर, बैंक कुछ गलत भी चार्ज कर देता है तो भी हमारे पास उसका भी ट्रैकर है, इंटरेस्ट रेट ट्रैकर. तो बैंक कई बार बताता नहीं है, कुछ भी डेबिट कर देता है. तो और व्हाटएवर वेयरएवर आई फेल्ट कि कहीं लूपहोल्स हैं या कहीं कोई मॉनिटर नहीं कर रहा है, कोई कर रहा है, तो हर चीज को सिस्टम में डाल दिया, एवरीथिंग द पीसी कैन, इट पॉप्स अप ऑन पीसी स्क्रीन. Very nice. Just go back to that main dashboard you had, the Google sheet. Which हाँ, one? नीचे जाओ जरा. Sorry, go up. Go up on the top. आपका सब कुछ इसी में पड़ा हुआ है? हाँ सर, दिस इज माय इंटरनेट. Okay. Were you on top of the class, Alok? In this, no sir, there are much better. Always your class has geeks. Those were much better. There were a lot of people who are much better than me. मैं तो quietly, I was just listening to them and just getting inspired by them, and I was doing whatever best I could do. आलोक की आवाज नहीं निकलती थी क्लास में? मैं तो बात ही नहीं करता था सर कुछ भी. आज पहली बार मैं इतनी बात कर रहा हूँ आपकी क्लास में. वेरी नाइस. ओके, ये न्यू वेंडर पेमेंट्स, ये क्या है? प्रोक्योरमेंट क्या है? प्रोक्योरमेंट आपका वो है, कस्टमर रजिस्ट्रेशन दिखाओ. Some of them are FMSs. I can show you my MIS sir, जो मैं मंडे को EM करता हूँ. 1 मिनट रुक जाओ, एमआईएस बाद में दिखाना. ठीक है सर. एमआईएस इनको समझ में नहीं आएगा, अभी इन्होंने एमआईएस किया नहीं है. ठीक है. तो इनको लगता है कि ये सब पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा. इनको अभी भी लगता है कि मार्केटिंग चल रही है मैं जो बोल रहा हूँ. तो एनीवे, बिल वेरिफिकेशन क्या है ये? सब हर, अब पहले जैसे सिंपल थिंग प्रोक्योरमेंट जो आपने पहला एफएमएस बोला था, दैट इटसेल्फ वाज हमारे लिए गेम चेंजर. मेरा आधा टेंशन तो वहीं खत्म हो गया. अब सिक्योरिटी डिसाइड करता है मेरे गेट पे फैक्ट्री में, जब कोई भी गाड़ी आती है या जाती है, ही एंटर्स इन द एफएमएस, अपने आप फिर वहीं से मीटर चालू हो जाता है सबका. तो ऑल माय बिल्स get come to head office on time, they get passed on time, they get paid on time. मेरे तो फोन आने ही बंद हो गए vendors के. I don't even talk to anybody anymore. Even my payment teams don't talk to them anymore. Everything is automated. और SAP से भी मैंने लिंक कर दिया Google Sheet को. So my payments also, अब Google gives the instructions to SAP and SAP directly gives instructions to the bank. तो आपके SAP भी है? हाँ सर, SAP also is there. SAP we have built on SAP. All this is data that comes out of SAP into Google Sheets. तो बट ये आप सारा काम गूगल शीट पे ही हो रहा है, SAP को साइड में कर दिया है? हाँ, SAP is back end, Google Sheets are the front end. तो सारी टीम अब SAP पे काम करती है और सॉरी गूगल पे काम करती है और SAP साइड में पड़ा हुआ है? हाँ, SAP से डेटा डंप कर देते हैं गूगल में and then we all work on Google. वेरी गुड. तो SAP कितने का था? SAP तो almost, I think we spent almost 75-80 lakhs in around. That was also quite some, 10-12 साल हो गए था उस बात को भी. 80 लाख रुपए आपने SAP पे खर्च किया, और गूगल पे कितना खर्च किया? 0 और negligible. क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास था G Suite, तो ऑलरेडी everyone was using. When we never used the power, we didn't know the power of Google until your class. वेरी नाइस. अब सारा का सारा सिस्टम पूरा गूगल पे ही चल रहा है? हाँ सर, entire organization runs on Google and Telegram. अब जो भी टास्क हैं, every task goes to individual. Every individual has his own dashboard. और जो भी टास्क उसके ड्यू हो जाते हैं, it comes on his phone on the Telegram, and he has his own dashboard which also he can access from his mobile or from his desktop. ओके, नॉन मूविंग स्टॉक्स क्लियरेंस FMS दिखाओ. ये रिमाइंडर है सर, ये ऑटो रिमाइंडर जाता ही रहता है उसको. ये एफएमएस है, and whenever in non moving stocks, automatically my production planning and control, she enters it here
and then it's dedicated to one particular salesperson. He is responsible. He has to clear this non-moving stock. और उसको टेलीफोन रिमाइंडर भी जाता रहता है और उसको एमआई स्कोर भी मिलता है इसके लिए, जब तक वो ये खाली नहीं करेगा स्टॉक. ये टेली रिमाइंडर दिखाना. हाँ सर. ये क्या है? The backend is up. This is a code that is running in the backend, or it keeps on reminding him on his phone that you have not yet cleared this non-moving stock. Very good. Next. So maintenance, should I show maintenance how we are doing? मेरे को मैं वो उस पे आ जाओ, मेन उस पे. हाँ सर. वापस जाना, मेन नीचे जाना जरा धीरे धीरे. बिल वेरिफिकेशन भी पूरा हो जाता है अपने आप. हाँ सर, वो भी पूरा. अब मैंने बिल साइनिंग भी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गई है. अर्लियर आई यूज्ड टू साइन एवरी इनवॉइस. बिल साइनिंग दिखाओ जरा. तो वो भी आज ऑनलाइन हो गया है. बिल साइनिंग आल्सो आई हैव डॉक्यू साइन. सो इफ आई एम ट्रैवलिंग वो लोग अपलोड कर देते हैं and I do an e-sign wherever I am in the world. So that's not an issue at all. This is only for problematic bills, this bill verification. जो problem bills हैं, they are entered here where there's a query raised. Then that person has to respond back and close that problem within the stipulated time. तो सारा परचेज ऑटोमेट हो गया. अब आपको परचेज भी देखने की जरूरत नहीं पड़ती. नहीं सर, only the main large ticket purchase that my father handles, that is the main in profit center, I would say. So that is almost 90% of our overall, or 80% of our overall purchases. That alone he handles. Everything else, all the other purchases are automated. Very nice. वापस जाना, नीचे जाना जरा. एक सेकंड रुको. कैश फ्लो, एक सेकंड. लोन यूटिलाइजेशन ट्रैकर, वेंडर डिटेल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट. आपने ऊपर इंपोर्ट का क्या लिखा हुआ है? इंपोर्ट दिखाओ जरा ऊपर. ये क्या है? तो ये जो भी हमारे इंपोर्ट्स आ रहे हैं उसमें बहुत प्रॉब्लम होती थी पहले. टाइम आजकल तो पेनाल्टीज इतनी ज्यादा हो गई है गवर्नमेंट की कि कुछ भी डिले होता है, कहीं भी डॉक्यूमेंटेशन बराबर नहीं है या व्हाटएवर. सो हियर एवरीथिंग, द डे द ऑर्डर इज प्लेस्ड इन इंपोर्ट, इट इज ऑटोमेटिकली कम्स हियर फ्रॉम द प्रोक्योरमेंट एफएमएस. अपने आप आ जाता है. वी डोंट मैन्युअली एंटर इट हियर. फिर यहाँ से अपने आप फिर द इंपोर्ट टीम हैज टू एंश्योर कि रेगुलर इंटरवल्स दे आर हैविंग ऑल द स्टेप्स प्रॉपर्ली कवर्ड. तो व्हेन द कंसाइनमेंट लैंड्स एट द पोर्ट, they are ready in every aspect to make the customs duty payment, to do the documentation. सब कुछ बराबर टाइम पे हो रहा है. और लाइसेंस भी हम लोग, we keep buying licenses to save on the import duty. उसके लिए भी I have made an FMS कि anytime there is license available. तो वो भी अब मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, अपने आप हो रहा है वो भी. वेरी नाइस. दिखाओ, वापस जाओ. गो बैक टू द मेन थिंग. अब नीचे जाओ जरा. लोन यूटिलाइजेशन ट्रैकर, ये भी आपने देख लिया कि यून कितना यूटिलाइज हो रहा है. कैश इनफ्लो. हाँ, कैश इनफ्लो एक मेजर प्रॉब्लम है सर. कस्टमर के पेमेंट्स आ जाते हैं बट एंट्री नहीं हो रही थी टाइम पे. तो हम भी फिर क्रेडिट दे नहीं देंगे. कितना क्रेडिट लिमिट है कस्टमर, बिकॉज आई डील विद लॉट ऑफ कस्टमर्स आई एम गिविंग क्रेडिट. Unfortunately, I'm not yet shifted to advance payment like the way you've been telling. So that is a challenge. But this is for ensuring that timely they enter the payments. And the moment they hit our account, immediately they enter it in the Google Sheets. Okay. आगे जाओ. New product developments also is on now completely. New business development is also on FMS. Even the customer complaints, sir, ये एक बहुत बड़ा issue था. कोई बराबर this has actually been a game changer. Customer complaint. तो the moment a customer complaint comes, तो sales वाले को तो जल्दी रहती है, immediately entry डाल देता है. FMS sheet डालो. फिर FMS में आ जाता है the exact the nature of complaint. And कौन सा customer क्या है, and till the customer does not give in writing, yes, the problem is resolved, that line is not closed. So the last step is when the customer gives in writing and it's uploaded as a PDF. Okay, customer is accepted that the issue is resolved. उसके बाद ये मतलब वो हो जाता है, ये कट आउट हो जाता है. हाँ सर, that's then when the customer confirms yes the issue is resolved, this line is closed. Very nice. Everybody scored on the every sheet, everybody scored. So हर बंदे की स्कोरिंग आती है हर चीज पे. कस्टमर कंप्लेंट पे भी, परचेज पे भी, बिल ट्रैकिंग पे भी, क्रेडिट पे भी, क्रेडिट यूटिलाइजेशन पे भी, कस्टम्स पे भी, इंपोर्ट्स पे भी, सब पे. In fact, if my salesperson asks me for a credit deviation, he is giving a negative score for that also. कि तुमने credit deviation क्यों मांगा, payment time पे क्यों नहीं लेके आए customer को. Very nice. वापस जाओ.
एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। वेंडर डिटेल्स, वापस जाओ, नीचे जाओ, नीचे जाओ, सेल्स दिखा दो एक सेकेंड। So ये तो typical, it's a very simple FMS only, sales to payment. Of course, lot of data we use from this FMS for analysis, but ये तो simple FMS है, sir. It ensures each and everything. And इसमें my Telegram is also linked. Wherever there's a deviation in credit, it comes to directly on my Telegram, on my mobile. Deviation in credit क्या होता है? तब उसका सी फॉर एग्जांपल मैंने उसको 50 लाख का ही लिमिट दिया था, एंड उसका 30 डेज क्रेडिट था. अगर ही क्रॉस 30 डेज, तो ऑटोमेटिकली इट जनरेट द मैसेज टू मी दैट ही हैज क्रॉस 30 डेज एंड कैन यू स्टिल सेल टू हिम और नो. I will say yes or no. I'll take a decision. I'll click a button yes on my phone. Then it goes to the next step. I say no, it does not go. और अगर उसने ये मांगा है तो उसका MI स्कोर खराब हो जाता है. हाँ, anybody, any salesperson asks me a credit deviation is destroying his MI score. मतलब अगर वो सिर्फ ये आके बोलता है कि सर मेरे को क्रेडिट ज्यादा देना है, तो उसका MI स्कोर माइनस हो जाता है. हाँ, बराबर सर. वाह, तो मतलब वो आके पूछ भी नहीं सकता, पूछेगा तो उसका स्कोर माइनस होगा. बराबर. सो अभी ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम हो गए क्रेडिट डिविएशन. वो उनको पता है कि आएंगे तो फिर क्या होने वाला है. मैं तो दे दूंगा, फाइनली उनका इफेक्ट होगा. वेरी नाइस. वापस जाओ. ओके, नीचे जाओ. एक सेकंड, रुको 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 रुको. प्रोडक्शन तो हमने देख लिया. क्वालिटी डिविएशन FMS दिखाओ. ये क्वालिटी का है. हाँ सर, इफ एनी क्वालिटी डिविएशन इज टू बी गिवन, इट हैज टू बी गिवन इन राइटिंग. नोबडी कैन टेक द कॉल जस्ट लाइक दैट वर्बली के आप ठीक है आप चला लो. आप उसको एवरीबडी शुड बी इन्वॉल्व, और सब जॉइंट डिसीजन से ही होता है ये, और उसको नेगेटिव स्कोर मिलता है ये डिविएशन लेने के लिए. ये क्या है? एक मिनट. क्वालिटी, डूअर नेम, लोकेशन. तो अगर क्वालिटी का डिविएशन मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट का क्वालिटी सर जो हम लोग बनाते हैं, इफ देयर इज एनी इशू इन द प्रोडक्ट क्वालिटी व्हिच द प्रोडक्शन हैज ऑब्जर्व्ड, so then they enter it here कि I am facing this quality problem, and the quality team also has the right to enter it here for production, vice versa, कि I am facing this problem in the quality of the product, you have to correct it, you cannot continue running the product in this manner. तो अगर क्वालिटी का डिविएशन होता है तो प्रोडक्शन को वहां पर रोक के उसको ठीक करना पड़ता है. हाँ, जब तक वो ठीक नहीं करेंगे वो नेगेटिव उनको मिलता ही रहेगा स्कोर. और जब तक क्वालिटी नहीं बोलता है ओके हाँ प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, द प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व. ओके, गो बैक. नीचे जाओ. हेल्प सिर्फ वो नॉर्मल वाली चल रही है. हाँ, हेल्प से तो वो नॉर्मली है सर. नीचे जाओ. कंस्ट्रक्शन प्लान क्या है? So आपने जो प्रोजेक्ट we do lot of expansion तो हो रही है every time. So everything is now on, even this is monitored by PC only. I don't even monitor this. Every step of construction is entered here like a chart, and time is fixed, start time and end time for every step. For most of our buildings are जो pre-engineered buildings ही हैं, factory sheds. So उसमें every step we are giving them the score to the civil. I have my own civil team. So we do in-house. Most of our construction जो हम लोग expansion करते हैं we do in-house. तो उनके लिए ये शीट बनाई थी मैंने. तो अभी मतलब हर चीज जैसे फुटिंग, अर्थवर्क, फुटिंग, बेस, PCC, बेस मटेरियल, मैट, फिक्सिंग वर्क. हाँ सर, everything is tracked, and all this is also monitored by PC only, and score is given to the civil team. कंस्ट्रक्शन वालों सुन रहे हो? ये आपका पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है. तो ये हर आइटम जो जो चल रहा है आपका सारा ट्रैक हो रहा है और ये अपने आप ही कर रहे हो. तो मेरे ऊपर मैंने आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि मिनिमम मैक्सिमम वर्क पीसीज डू एंड मिनिमम वर्क आई एम डूइंग. दैट इज द एंड वेयरएवर आई फेल्ट कि एवरी इंडिविजुअल इन द कंपनी व्हाटएवर वर्क ही इज डूइंग ही शुड बी मॉनिटर्ड एंड ही शुड बी स्कोर्ड फॉर दैट. सो दैट इज दोस आर द आपका प्रोडक्शन, आप प्रोडक्शन का काम करते हो, मगर आपका अगर कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है, ये जैसे पौंडीचेरी है क्या? ये
We are doing three projects right now. One in Pondicherry, one in Uttarakhand, and one in. So all three are monitored from this. ये सब ये तीनों प्रोजेक्ट भी अपने आप ऑटो पायलट, फैक्ट्री बन रही है वो भी ऑटो पायलट पे है। हाँ सर। ओके, गो बैक। एनपीडी क्या है? कौन चिल्ला रहा है? New product development, sir. That also is a very that is still actually I'm still struggling in new product development. तो मैंने अभी लास्ट 2 हफ्ते पहले ही नया FMS बनाया था। I've divided into 3 FMSs. So उसमें machine procurement, mode procurement and robo तीनों का अलग-अलग मैंने FMS बना दिया था। And customer approvals भी होते हैं उसमें। It's a very complicated process, new product development for us. So that is also now, I won't say 100% is perfect on FMS, but yeah, more or less, I think we have settled down on the new product development. ये मुझे बता दो किस किस का वो है? ये वेंडर पेमेंट ट्रैकिंग FMS है, बैंक रिकंसिलिएशन का भी FMS बनाया हुआ है। हाँ। FPIPL क्या है? मेरी कंपनी का नाम है इंश्योरेंस। टाइमली इंश्योरेंस हैज टू बी डन ऑफ ऑल द एसेट्स, ऑफ ऑल द मैन पावर, जो हेल्थ इंश्योरेंस है, एवरीथिंग whatever we have, the statutory insurances also, so everything is being tracked on this. और ये क्या है? लोन रिलीज ट्रैकर, रिलीज FMS, इनवर्ड रेमिटेंसेस FMS, कैपिटल इक्विपमेंट ट्रांसफर। ये कैपिटल इक्विपमेंट ट्रांसफर क्या होता? From one plant to another plant when we transfer assets, कई बार ये लोग बराबर इनवॉइस नहीं बनाते थे और they don't make proper documentation. And we are also not able to track which plant's asset is lying where. So that is why we use this capital equipment transfer. ठीक है, बैंक रिकंसिलिएशन का FMS दिखा दो जरा। ये अभी हम लोग we are actually making it automated in SAP. So that work is going on. So these are the entries that we do here. Finally, the accounts head confirms that it has been done. Okay, go back. Foreign remittance क्या है? जो अब तो exports है नहीं इतनी, but whenever we have exports, then the inflows that come. अच्छा, आगे नीचे जाओ। बस यही this is the bottom most part. Very nice. Maintenance का दिखा दो, क्या कर रहे हो? और अब आपको ये शीटें देखने की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं सर, आई डोंट सी देम एट ऑल। अभी इतने दिन बाद में तो मेंटेनेंस, लाइक आई टोल्ड यू, एवरीथिंग इज ऑनलाइन, एवरीथिंग, हर चीज ऑनलाइन है। हस्की इज आवर टेक्नोलॉजी पार्टनर फ्रॉम कनाडा, तो उनकी मशीनें चलती है हमारे यहाँ। तो हर चीज डेली मोबाइल में अपलोड होती है। लोगों को ऐसे लगेगा कि इतना डेटा आ रहा है, इतना डेटा आ रहा है, लोगों का टाइम मिल रहा है क्या? Actually, all doers are only entering. I am not allowed any third person to enter. जो काम कर रहा है वही अपना डेटा एंट्री करेगा। तो जरा एक मिनट एक्सपैंड करो, जूम इन करो। ओके, ये क्या है? मशीन नेम, हाइड्रो, ये ऑयल लेवल, ऑयल टेम्परेचर, मतलब ये डेली जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है, that और मशीन के पैरामीटर्स भी यहाँ रिकॉर्ड हो जाते हैं। एंड देन द प्लांट हेड कैन सी कि कौन सा रेड कलर्स आर ऑल पैरामीटर्स दैट आर आउट ऑफ स्पेक, सो दे अटैक दैट ऑन द नेक्स्ट डे। अच्छा, लेफ्ट राइट करो जरा। ये टेम्परेचर, एक मिनट, धीरे धीरे धीरे। वैक्यूम प्रेशर, टूलिंग प्लेट, मोल्ड सेंसर, सर्वो मोटर टेम्परेचर, ह्यूमिडिफायर, प्रोसेस टेम्परेचर। आगे जाओ। कूल पिट, एक मिनट, धीरे धीरे। शटल नोजल टेम्परेचर, इनलेट टेम्परेचर, ऑयल रिट्रीवल सिस्टम, चेक बॉइलिंग और कूलिंग, एबनॉर्मल नॉइज इन मोटर, कन्वेयर बेल्ट, हीटर कंडीशन, लीकेज इन हाइड्रोजन ऑयल। नीचे तो ये सारा का सारा होता है। लेफ्ट जाओ। हाँ सॉरी, गो राइट। तो ये हर मशीन का होता है। हाँ, एवरी डे वी हैव फॉर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वी हैव डन प्रैक्टिकल। ऐसा नहीं कि जस्ट फॉर द नेम सेक हम लोग करते हैं, बेस्ड ऑन द नॉलेज दैट वी इतने 20 साल से जो माय टीम हैज गेन्ड द नॉलेज, वी हैव मिनिमाइज्ड दैट एफर्ट ऑफ डूइंग अननेसेसरी थिंग्स एवरी डे। अच्छा, ये सिर्फ, हाँ, ये हस्की की है। अब ड्रायर की दिखाओ। सिमिलर ही है सब ड्रायर का भी, जो की पैरामीटर्स है, दैट इज व्हाट वी मॉनिटर इन द ड्रायर आल्सो। बैकएंड तो खैर वो कोडिंग डेटा है सब। अच्छा, डिह्यूमिडिफायर। तो ये अलग अलग हर मशीन है, सारी की सारी, सब चीजों का, हर चीज का किया हुआ है। हाँ, और जहां भी रेड है, मेंटेनेंस वाले को नेगेटिव स्कोर मिलता है। वेयरएवर द पैरामीटर इज आउट ऑफ स्पेक, ठीक है। ये सारा डेटा एंटर कौन कर रहा है?
Yeah, the maintenance in charge, whoever is doing the maintenance, he enters the data. मैंने DO को ये काम दिया ही नहीं है. DO का काम सिर्फ ऑडिट है और प्रोडक्शन का डेटा एंटर करता है. और ये सारा काम डूअर एंटर कर रहा है, सारा डेटा. एंड वी मेड इट सो सिंपल फॉर हिम कि मोबाइल से ही वो एंटर कर देता है अपने, और उसको डेस्कटॉप भी दे दिया शॉप फ्लोर पे. तो इफ ही डजंट फाइंड कन्वीनियंस इन मोबाइल, ही एंटर्स ऑन योर डेस्कटॉप. सारा डेटा, जितना भी डेटा आ रहा है, सब हर जगह पे डूअर ही एंटर कर रहा है. हाँ, आई हैव मेड इट फ्रॉम बिगनिंग. आई हैड बहुत शुरू में रेजिस्टेंस आया था, मेरे टाइम ही नहीं मिल रहा सर मेंटेनेंस करने का, मैं खाली डेटा भरने में मेरा टाइम निकल जाता है. बट नाउ 15 मिनट से ज्यादा लगती नहीं है उनको दिन में. वेरी नाइस. गो बैक. अब 15 मिनट. अब शुरू में कितना चैलेंज आया था उनसे डेटा भरवाने में? सर अलाइनमेंट सब नहीं कर रहे थे, नेगेटिव स्कोर्स मिल रहे थे, सो बहुत ज्यादा ऐसे इश्यूज आ रहे थे पहले. बट देन आई थिंक दे ऑल रियलाइज द की थिंग इज, जो प्लान सिल्वा सा प्लान आपको मैंने कई बार आपको बोला, इट वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर मी. मेरा सबसे बड़ा हेडेक वही था, और इट वाज गिविंग मी स्लीपलेस नाइट्स. एंड दैट वाज द प्लान. आई स्टार्टेड दिस सिस्टम फर्स्ट, एंड व्हेन दे सॉ द बेनिफिट्स, वो घर बराबर 6 बजे शाम को जा रहे थे, कोई ओवर टाइम नहीं था, संडे को आने की जरूरत ही नहीं पड़ी उनको. दैट मच एफर्ट दे पुट इन द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड फिलिंग दिस ये फॉर्म्स, कि अब वो दे आर सो हैप्पी, दे आर एक्चुअली वेरी हैप्पी doing this, because they know that their life has become a lot much easier, and when they see the good scores that they get, that is another boost for them कि मुझे सब -10 से नीचे मिल रहा है, मेरा -10 से ऊपर जा ही नहीं रहा है. तो वो एक उस समय what was the challenge जब आपने शुरू किया था ये सिस्टम? अभी तो आप बोल रहे हो बिकॉज आपने सारा कर दिया. तब उसमें मल्टीपल चैलेंजेस. एक तो ब्रेकडाउन्स बहुत ज्यादा थे उस टाइम, तो प्रिवेंटिव कैसे करें जब ब्रेकडाउन. नहीं, आई एम सेइंग ओवरऑल डेटा भरने के लिए, जब आप प्रोडक्शन वाले को बोल रहे थे, पीएमएस वाले को बोल रहे थे, सुपरवाइजर को बोल रहे थे डेटा भर, हाँ, नीचे वाले लोगों को बोल रहे थे डेटा भर, तो वो लोग डेटा भर देते थे? नहीं सर, कोई नहीं भर रहा था. कोई बोलता था मुझे आता नहीं है सर, मोबाइल यूज करना नहीं आता है, मुझे डेटा भरना नहीं आता है. सम ऑफ देम आर अनएजुकेटेड, उनको वो भी नहीं, मतलब मैंने बोला खाली नंबर्स ही डालने हैं, यस नो डालने हैं, उसमें एजुकेशन की जरूरत ही नहीं है. मैंने तो कोई बोला नहीं कोई टेक्स्ट टाइप करो, कोई लंबे सेंटेंसेस टाइप करो, वो तो है ही नहीं, जस्ट क्लिक बटन. तो क्या बोले वो? फिर एक बार दो, इट्स ओनली अलाइनमेंट. माय प्लांट हैड हेल्प मी अ लॉट. बहुत अलाइन कर करके डेली कर करके, किसी को डांटा नहीं, किसी को, मतलब वी नेवर पेनलाइज एनीबॉडी. धीरे धीरे करके व्हेन दे सॉ द रियल बेनिफिट्स कमिंग, फिर अपने आप ये सेटल डाउन हो गया सर. नाउ अदर प्लांट्स हैव कॉपीड देम. मैं उनको देख के बाकी प्लांट्स भी फॉलो करने लगे. तो अब ये बाकी सब जगह पे ऑटो पायलट लगाने में वो अपने आप हो गया? दैट वाज अ सिंपल प्रोसेस. हाँ सर, आपने बोला एक प्लांट से शुरू करो. आई चोज द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक प्लांट एंड देन कॉपी पेस्टेड इन अदर लोकेशन. तो वो अब वो सीमलेस था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी कट कॉपी पेस्ट में? नहीं सर, प्रॉब्लम तो फिर भी आती है. ह्यूमंस हैं तो देयर विल बी रेजिस्टेंस. so that problem will always come. Pondicherry, like for example, अब थोड़ा सा issues आ रहे हैं वहाँ, so I am now focusing how to improve the system better. और जो प्रॉब्लमैटिक प्लांट था उसमें प्रॉब्लम क्या थी? Pardon sir? जो प्रॉब्लमैटिक प्लांट था उसमें प्रॉब्लम क्या थी? No, one is everybody was demotivated, demoralized. किसी को डेटा एंट्री में इंटरेस्ट नहीं था, कभी किया ही नहीं ऐसा काम. They didn't believe in the power of data, that how this can help them improve their performance. Apart from the data etc, was that मतलब that was a profitable plan? आप कह रहे थे मेरे को sleepless nights क्यों देता था? So it was bleeding. It was literally like घड़े में छेद हुआ है, पानी गिरता ही जा रहा है. That was the situation in that location. And in front of my eyes, and I couldn't do anything about it for so many months continuously. Then there was a time when we thought we had to shut it down if we're not able to correct it. But then after implementing these systems, everything transformed. That plant has never made a loss after that. वो पहले लॉस मेकिंग था, कितना लॉस था? So at least 15 to 20 lakhs we were losing every month minimum. साल के 1-1.5 करोड़ रुपए तो वो प्लांट खा ही रहा था. और फिर वो उसके बाद आज क्या हाल है? अब तो we have crossed net we have done almost I think 15 last year. So overall out of 3 plants, and that is one of second most profitable plant of our out of the 3 plants, the Silvassa plant. Wow. Okay, go back. Show us your MIS also. So all the people are on MIS, all my 150 people, including the shift in charge से लेके CEO तक, everybody is on MIS.
So I just choose the name, and I'm not Mr. MIS since 2020. Wherever I am, whichever time zone I am, whatever I'm doing, that's my record till date. By God's grace, I'm not fallen sick on a Monday, so I'm not missed a single MIS till today. आपने And कोई भी ईएम मिस नहीं करी है आपने पिछले फ्रॉम 2020? no, since BMP started and since I implemented the EM, I've not missed a single EM. And this is what it is now. Iske sare FMSs, checklist, everything data comes for this guy called Ajay on this screen. So when on Monday morning when he enters the Zoom call, he sees what he did last 7 days, in which area, in advance payments, where he's actually only a production head, but इसने कोई advance payment दिलाया होगा कोई product खरीदने के लिए, but वो माल आया ही नहीं, but advance दे दिया. It was supposed to come in a stipulated time, so he got a negative score for that. Similarly, he traveled somewhere and he didn't submit his travel bills, so he will not get his money. So that for that he's getting negative score. And of course, most importantly, his performance, the OEE of each machine, what is under him, that all the scores come here. टास्क वाइज उसका सारा स्कोर आ रहा है. हाँ, और फिर ये कंसोलिडेट होके ऊपर आ जाता है वर्क नॉट डन ऑन टाइम एंड परफॉर्मेंस. और देन इसके लास्ट 3 वीक्स के भी स्कोर दिख जाते हैं राइट साइड में. ओके और ऐसे हर आदमी का कितने लोग हैं? I think we should have more than 100 sir here. आप 100 लोगों का ईएम लेते हो पिछले 2 साल से रोज बिना फेल के? हाँ सब. अब मेरा चालू होता है सुबह 9 बजे and it gets over by 1:30. It's draining. It's actually a very draining exercise, but I enjoy doing it. सो 9 से 1:30 बजे तक आप सारा का सारा 100 लोगों का एमआईएस ले लेते हो? हाँ सर. और इस लेवल पे लेते हो? हाँ, each like मैं इसमें I pick and choose. 3 मिनट आपने बोला था, तो I try to restrict it within 3 minutes. I don't go into operational matters. डिस्कस स्पेसिफिकली उसके ऊपर ही, उस आदमी के ऊपर ही डिस्कस करता हूँ, बट स्पेसिफिक नंबर्स आई चूज के जो मेजर इश्यूज हैं, तो आई ओनली चूज दैट एंड आई टॉक टू हिम. खोलो जरा किसी और का खोलो, सुपरवाइजर का खोलो. ये सुपरवाइजर है, इसका सिर्फ प्रोडक्शन रिलेटेड है. द मशीन्स दैट ही हैंडल्स, जो उसके अंडर में मशीनें हैं, ओनली दैट डेटा कम्स हियर. सेल्स वालों का खोलो. इसकी क्या स्कोर आता? Is the screen visible sir properly? यस. तो इसको डेलीगेशंस काफी इसके पेंडिंग हैं, 3-4. मैंने इसको कई पर्सनली आउटसाइड द न्यू बिजनेस डेवलपमेंट आई हैड गिवन हिम सम डेलीगेशंस, सो दैट आर पेंडिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट एनबीडी आपने जो बोला था, फिजिकल मीटिंग, प्रपोजल क्रिएशन, नेगोशिएशन, फाइनलाइजेशन, conversion, final conversion, Zoom, did he do the Zoom meeting or not as per the plan? So payments, although he's not in charge of the CRR payments, but new business development payments he's in charge. So that payments, whether he got it on time, and then credit deviations if he has taken anything. So those are the scores that he's getting. ये इसका हर चीज का हो गया, लॉस्ट क्लाइंट, एफएमएस. हाँ, लॉस्ट क्लाइंट भी इसमें आ जाता है, लॉस्ट सेल्स भी इसमें आ जाता है कि एग्जिस्टिंग क्लाइंट के लिए कोई कारण सेल नहीं गया, इफ ही इज रिस्पांसिबल फॉर इट, ही गेट्स इट. वाओ, ये क्या क्या है? एक सेल्स वाले का खोलो जरा. This is a sales head or NBD head of Western region. इसका क्या आ रहा है? प्रपोजल कितने सबमिट किए? Proposals to he at सैंपल दिया, प्रोडक्ट डिजाइन एंड अप्रूवल बाय कस्टमर, कस्टमर अप्रूवल बाय प्रोटोटाइप, सैंपल अप्रूवल बाय कस्टमर, सैंपल अप्रूवल बाय कस्टमर. नीचे जाना, ट्रायल अप्रूवल, नॉन मूविंग स्टॉक, क्रेडिट डिविएशन, फर्स्ट लेवल क्रेडिट डिविएशन अप्रूवल. नीचे जाना. वाओ, तो स्टेप्स इसके आ जाते हैं, जो काम किया इसने सब कुछ यहाँ आ गया. हाँ, सब कुछ is whatever is his responsibility, everything comes here. He's having lot of delegations, that is also here. ओके, अब इसको बंद करो और पीपीटी ऑन कर दो. आपने ये सारा का सारा जो किया, पीपीटी ऑन करके दिखाओ, पीपीटी पे आपने क्या किया हुआ है. ये सब जो है, ये साइंस किस पे आधारित है?
जो आपने पीपीटी जिस पे आपने ये साइंस आधारित की है, फाइनेंशियल समरी नेक्स्ट शीट पे जाना इसको। हाँ, FMS आपको दिखाई दिया है, डैशबोर्ड ऑफ ईच डूअर. आई विल शो यू द डूअर डैशबोर्ड which I didn't show you. Each doer, do you want me to show the doer dashboard, sir? For every doer we have made a dashboard. Do you want me to show that? दिखा दो, जल्दी दिखा दो. हाँ, डुअल डैशबोर्ड दिखा दो. एक typical doer का dashboard है. She is handling accounts, so she has done everything up to date. From 2nd January onwards, her work is pending. This is an art script. So once she completes, she just clicks submit over here, and if required, the attachment is also there. So it automatically gets updated in the FMS that she has completed. This is for ये सारा का सारा बाद में जो टेक्नोलॉजी क्लास होगी उसमें सानिध्य कब करा आपने? ये सब सारा का सारा सिस्टम आपने बीएमपी में ही बनाया है और सब कुछ मतलब यही के टेक्नोलॉजी लेके बनाया है? 90% और 95% बीएमपी के 9 महीनों में मैंने सब फिनिश कर दिया सर, एंड देन इमीडिएटली एएसपी स्टार्टेड फॉर मी. Okay, great. These are all the doers. They just go to the internet, they click on the photo, and the dashboard opens. So that is the so all very simple. The doer has to just click on one button. Now someone asked कि how do you know that work is done or not? एक तो FMS में तो automatically पता चल ही जाता है next step पे अगर previous step हुआ या नहीं हुआ. That is one. Secondly, जो machine parameters someone asked कि how do you know that the machine parameters recorded are correct or not? So we have an audit. हमारा audit system होता है कि DEOs randomly goes on different days to different machines and he monitors the score, the numbers that are being entered by the maintenance team. And also we have 3 levels. Level 1 is the maintenance enters it. Level 2, the plant head certifies it. And level 3, the overall head sitting in Pondicherry, he certifies the data once in a week. So there's a multiple level check also of the data that is being entered. Very nice. Now go back to your PPT. अब ये सारा जो सिस्टम बनाया इसका बेसिस समझा दो and just go through this कि आपने क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए. So everything, whatever as you have said, financial summary sheet, GP, we did flowchart, all the steps, all the process. FMS आपने इसी बेसिस पे बनाया, चेकलिस्ट आपने. हाँ, जैसे आपने बोला, exactly all my processes are on FMS. Everything, each and everything in the organization is on FMS, and each and every step is being scored to some individual or the other. Very nice. A checklist, every repetitive task, every deadline, every statutory requirement is on a checklist. Some form of the checklist or the other. One is our ultimate checklist, and then there are some other type of checklists for banking related, which are not possible to put in ultimate checklist. So we have that also as a checklist. Okay, next. Production management, I've already shown you my PMS. क्या किया आपने प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ये बता दो क्योंकि everybody struggling with PMS. So I had to go back to the shop floor. I sat down for a week there in my Silvassa plant, and I was just observing again from scratch, and then tried to copy that into with my DME into the sheet. Okay, how can I emulate that into sheet, and what are the typical issues we face? Why production does not sometimes meet the demand? Why there are rejections? Why there are hold stocks? How to monitor that? So trying to factor everything in, just go shop floor पे बैठ के पूरा मैंने उस हिसाब से step by step process बनाया, and then उसको we converted into a code in my IMS. So that's what we realized, that if the machines are healthy and if the plans are right, फिर compliance and meeting demand is not a major challenge. So that is what exactly happened for me. वेरी नाइस. तो पीएमएस आपने वैसे ही किया, मतलब आपने जाके शॉप फ्लोर पे बैठे और उसके बाद वहां पर बैठे बैठे ये सारा पीएमएस खुद ही बनाया. पीएमएस और कोई नहीं बना सकता सर. एफएमएस तो ठीक है, आई कैन डेलीगेट टू माय वंस द सिस्टम क्रिएशन टीम इज देयर, वो तो अपने आप कर देंगे. बट पीएमएस तो अपने ही कोई बनाना पड़ेगा और कोई नहीं बना सकता, एंड इट इज वेरी यूनिक टू एवरीवन. इट्स नॉट वन साइज फिट्स ऑल कि मेरा पीएमएस किसी और को सेट नहीं होगा. पीएमएस आपको क्यों, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि पीएमएस खुद ही बनाना पड़ेगा? Because you जैसे I have built this business from scratch, so I know what are the challenges, what are the intricacies of the entire process, and not everybody has that complete vision or picture in the organization. Everybody contributes in bits and pieces, but PMS is something कि पूरा you need to know right from inventory how much, there are some decision making required there, फिर production actually होता कैसे, and then after that dispatches and sales. So it's What will you advise? सारे ये जो लोग हैं इनका सब पीएमएस में फंसे हुए हैं अभी,
तो इनको क्या एडवाइस करोगे कि अगर पीएमएस करना है और पीएमएस क्रैक करना है तो क्या करना चाहिए? So just start simple. I started by thinking that how do I ensure right inventory is maintained. That was my first point. कि ज्यादा भी नहीं हो कम भी नहीं हो और मशीन भी खाली नहीं रहे कि machines are also running my and at the same time I am having enough stocks which are within my limits where I can sales कभी हाथ से जाए नहीं because of shortage. So then converting that into the product planning is that's how I started, and I think most of us can do it, sir. It's very basic, simple way we start. Automatically, it will get improving on its own over a period of time. वेरी गुड। तो पीएमएस आप कह रहे हो सबको खुद ही बनाना पड़ेगा और अपने आप ही बनाना पड़ेगा और सर मारना पड़ेगा, ये आयुष, इज दैट व्हाट यू सेइंग? Yes sir, इसमें कोई आपको हेल्प नहीं कर सकता, you can only help yourself. किसी दूसरे का भी पीएमएस देख के मतलब, I remember during BMP we had a early morning session with all the batchmates where everybody showed their PMS. Yes, we did pick up some ideas from each other, but finally जो पीएमएस खुद ने बनाए वही काम करेगा। तो आप क्या सजेस्ट करते हो सबको कि खुद ही बनाएं, सारा खुद ही करें, खुद अपने एमआईएस के लड़के के साथ? आपके एमआईएस के लड़के ने आपकी मदद करके ये करवाया? हाँ सर, प्लान खुद को करना है, एग्जीक्यूट उसको करना है। वेरी नाइस, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। नेक्स्ट, इन्वेंटरी मैनेजमेंट ऑल्सो मैंने आपको बता दिया, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी मैंने बता दिया, व्हाट आर द वापस जाओ आईएमएस पे। Now, entire decision making is automated. Almost 90-95% of the decision making of production planning, procurement planning, and based on sales, it's all automated. Very nice. Next. Preventive maintenance is a very big game changer for us. इसमें I also have a sheet called equipment maintenance alert. कई बार verbally बोल देता है शिफ्ट इंचार्ज, सर ये मशीन में प्रॉब्लम आप ठीक कर दो, वो बोलेगा ठीक है मैं कर दूंगा ठीक, फिर करता नहीं है, 2-3 दिन, हफ्ता भर, 10 दिन निकल जाता है, then that spirals into bigger issue. So now I have something called equipment maintenance alert. तो shift in charge immediately entry डाल देता है कि ये मशीन में ये प्रॉब्लम है. Again, then the clock starts for the maintenance person. He has to rectify that problem within the stipulated time, and then the shift in charge has to confirm कि हाँ ये problem solve हो गया है, अब machine is back to normal. Very nice. Next. One of my biggest strength is my MDO. So I have by touch wood, I have a very good team right now, and I hope this sustains for long. So we created a new office just across my office for them, and my EA is the one who actually manages all of them. So very nice. My data management executive has been my secret of my implementation. I think he's no longer with me. The next guy is taken over, but then he did a long-lasting impact on the organization. So उसको ऐप स्क्रिप्ट और जावा आती थी। हाँ, तो क्योंकि उसको आती थी ऐप स्क्रिप्ट और जावा, तो उसने फिर आपके सारे सिस्टम्स बना दिए। हाँ, और he could the benefit of that guy was that उसको समझ में आता था कि मुझे चाहिए क्या exactly, what exactly I'm looking for, and he used to convert that into process, my thinking into process. So that really helped a lot. Very good. I imagine that he could convert that into code. Very nice. इससे पहले वाला स्लाइड पे जाओ जरा। तो आपके पास अभी 3 पीसी हैं और आप कह रहे हो आप एक और ले रहे हो। हाँ सर। ये आपका एमडीओ है। यस। और ये कितना इंपॉर्टेंट है आपका एमडीओ? सर यही कंपनी चला रहा है। I am not running the company anymore. They are the ones who are running. So very nice. Next. Because PCs मेरे सारे यहाँ हिंदी स्पीकिंग PCs मिलना मुश्किल है तमिलनाडु में, but I've got, luckily I have 2 PCs who also speak Hindi, so they can talk to my Silvassa and Roorkee plant also. But all are very young girls, they are just like 3 years of fresh graduates. So we have a good training system अच्छा है कंपनी में. इसमें churn भी थोड़ा होता है PCs में, not everybody stays for long. So, but we are able to, the training, आपने जो बोला था training videos सब चीजों के बनाए हुए हैं, almost everything there's a training video. So on YouTube. तो कोई भी ये positions में कोई भी नया join करता है, तो just training videos देख के almost 60-70% they learn from that itself. Next.
MIS also, I showed you my MIS how I am doing, and अब थोड़ा सा मुझे लग रहा है सर 3 साल बाद में मे बी पीपल कैन गेट कंप्लेसेंट, सो दिस ईयर आई एम सॉर्ट ऑफ थिंकिंग ऑफ now doing the appraisals only on MIS as you guided me last 2 weeks back. I spoke to आपसे बात हुई थी, so I'm now planning to from June onwards 2023 the increments will be completely on score linked only. तो अभी आपने 2 हफ्ते पहले मुझसे बात करी थी, हाँ सर. तो आप अभी भी मुझसे बात करते हो? सर आपसे तो जितनी बात करें कम ही है. Always has something new to learn. Very nice, very nice. Next. EM is my brahmastra, sir. Clearly, that is something I get a पूरा company का snapshot मुझे उस 3-4 घंटे में मिल जाता है. I know each and everything that's going on in my organization in those 3 to 4 hours. They're the most powerful 4 hours of my operation. तो आपने ये रेगुलरली आपने कभी छोड़ा नहीं इसको? नहीं, अभी तक नहीं छोड़ा सर, कभी नहीं छोड़ा मैंने. इनफैक्ट अभी जापान गया था तो उनका वहाँ द टाइम जोन वाज डिफरेंट अनफॉर्चुनेटली, तो मैंने फिर EM संडे को ही कर ली, एंड एवरीबॉडी केम, एवरीवन कंप्लाइड, सारी ऑर्गेनाइजेशन केम ऑन संडे ऑनलाइन. वेरी नाइस. नेक्स्ट. Sales, I did the ASP, and of course आपको मैंने कितनी बार I've repeated it multiple times, that has been a game changer for me, because that has been the biggest weakness of my organization. We are very strong operationally, we are very strong in manufacturing, but sales was always a challenge. And NBD CRR different bifurcation itself was a very big, very big game changer for us. And now, सेल्स के थोड़े सिस्टम दिखा दो जो आपने बनाए, 1-2 जल्दी से. Guys, you want to see the sales systems? Hello? No. हाँ चलो जल्दी दिखाओ. So typical, nothing very. जैसे I have this dash, I monitor the. आपको पहले PPT बंद करना पड़ेगा, PPT दिख रही है अभी. Oh sorry. सेल्स का. So this is my review system. These are all the leads. Lead generation की sheet अलग है. और my lead gen she enters, उसको मैंने टारगेट दिए हैं कि मुझे ये लीड्स चाहिए, इस सेगमेंट में इतने लीड्स चाहिए और ये टर्नओवर चाहिए, ये उसका क्रेडिबिलिटी होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ रेपुटेशन. थोड़ा जूम इन कर लो. So based on that, every Tuesday I sit with my each sales head for 1 hour, each person, and then we discuss on each lead where we are standing. And there's an FMS running for that, clearly, which gives all the steps, right from whether it's an existing product or a new product. If it's a new product, it goes into नया product development में चला जाता है. If it's an existing product है तो फिर we have to just do the trials. So पहले first call होता है, which my sales coordinator does, and then my marketing head, she takes an appointment for my marketing head. Then he meets them either by virtual or physical. And then new product है, existing product. If it's an existing product, तो simple है. Then now go back and show us your what do you do for analysis on sales. Sales की analysis कैसे होती है? वो जो आप दिखा रहे थे जो हाँ ये क्या है? This is the detailed analysis of my sales, where product wise, customer wise, segment wise, we can do the profit, how we are doing, and also we can see the numbers like capacity shortage kind हो रही है. So this gives me, like we did of this any one particular product, we did for example 9,000 tons almost in a year. So that product is our flagship product, and product wise GP आ जाती है तो we know exactly which product we should focus on, which we should not focus on. So this gives me the complete data, and all this is from SAP. Nothing is from Google Sheets. All these numbers are coming from SAP over here. Very good. और दिखाओ. But ये वाला सारा Google पे बनाया हुआ है. हाँ, this is the data studio. We have created on Google Sheets, and then from Google Sheets it comes down to Google Data Studio. और ये सारा डेटा स्टूडियो, गूगल शीट, ये सब आपने वर्कशॉप में ही सीखा है? हाँ सब सानिध्य ने आइडिया दिया था about data studio, then we used that and we built on it. Very nice. ये क्या है? So these are the top. Now I can choose, for example, which year and which particular type of customers I want, and instantly I know whether I'm making profit or loss with those particular customers.
कस्टमर वाइज आपको प्रॉफिट लॉस निकल आता है? हाँ, सेगमेंट वाइज भी कर सकते हैं इसमें और ग्रुपिंग वाइज भी कर सकते हैं, जैसे बिस्लरी इज माय कस्टमर और टाटा इज माय कस्टमर, सो देन आई कैन ग्रुप देम आल्सो in whichever way I want. So a lot of data mining can be done in this. और क्या करते हो उसमें? आपने एनबीडी सीआरआर कर लिया पूरा? हाँ, एनबीडी सीआरआर शीट भी आपको दिखा देता हूँ. That CRR plan, I call it CRR plan versus actual. So this is my sales plan for this month, week wise. So और आपके पास सारे बड़े बड़े क्लाइंट्स ही हैं? Yes sir, all are large, mid-size to large customers. So this is my, for example, sales plan. Sir, I hope there is no competitor of mine on the BMP class. I'm sharing all my critical internal data. Doesn't matter, वो कुछ नहीं समझ में आएगा किसी को. I don't know, but so this is my, like, this is how we do the sales planning for the month. In beginning itself, CRR, and every week she gets scores. The CRR girl who handles that particular customer. पूरा सेल्स अब वीकली हो गया, मंथली सेल्स बंद कर दिया आपने? हाँ, वो तो आपने एकदम क्लियर बोल दिया था सर. तो ओनली वीक, एवरी ट्यूसडे मॉर्निंग वी डिस्कस ऑन द लास्ट वीक. ओके, नेक्स्ट. So I think sales, I don't remember much more what we have done. One second. तो ये लॉस सेल्स का है, and then lost clients का है, then sales pitch we have created videos, then new and CRR order tracking, NBD, even phone calls, like average rupee sales sheet, phone calls that they are supposed to do every day, everything is being monitored. अगर उसको 15 कॉल करने हैं CRR के लिए, so you have to do all those 15 calls every day, and that is also scored. She scored on that. If she misses to call any customer, she's immediately scored on that. सीआरआर ऑर्डर ट्रैकिंग कर दो, जरा खोल के दिखाओ. Sir, I'll have to. I have another call at 11:30. चलो ठीक है, we'll close this up. Now tell me what is the overall, fast shut the whole thing down. Now what are the overall results you have got, and just show me the last slide. That was really nice. एक second, last slide दिखा दो. Last slide. So this is what I'm following now. Spend only Monday on operations and repetitive tasks. Then I'm on Tuesday, on Wednesday, Thursday, and Friday. Either I'm traveling on NBD or I am in a coffee shop. On Saturday, I focus on learning something new. And of course, the remaining 3-4 days, I only focus on profits and NBD. Only these two things. होटल चेक इन कर रहे हो अभी भी? Hotel check-in abhi is the October onwards I have not done, sir. October, November, December I have not done anything. But उससे पहले? उससे पहले तो regularly every 2 months I was doing for 3 days. Okay, very nice. और अभी बंद कर दो इसको. What are the overall results you've got now? Fast. So the biggest results is that now I have confidence of running this business, managing the show. और पहले जब आप मेरे पास आए थे तो आप ये बिजनेस बेचना चाह रहे थे, ये कह रहे थे? So we had the offer, and I think if I had not done your program, we would have exited this business for sure. You would have sold this business. Yes. Okay. Of course, the relationship with my father is on a personal note. That is something that has transformed because of you. It's magic. It's worked like magic now. Since 2021, me and him are more like friends, no more at loggerheads. पहले क्या होता था फादर के साथ? Sir, it was hell. Every day was hell for me. He used to hate coming to office. I used to hate going to the plants, and it was frustration and self-belief. I would say a little bit of depression also. But I think this journey has completely, I mean, I just followed and you guided us, and I think I'm in a much better space today, mentally also. Very nice, very nice, excellent, brilliant. And overall आपको जो results मिले, inventory level आपका, आप कह रहे 200 करोड़ से लेके 400 करोड़ पे पहुंच गए हो अभी आप टर्नओवर. तो आपके इन्वेंट्री वगैरह कितनी बड़ी है, और आपने जो प्लांट में 200 करोड़ से 400 करोड़ सेम प्लांट है विदाउट कैपिटल एक्सपेंशन, कि आपने नए प्लांट डाले 200 से 400 करोड़? Zero capex. This is the first year we are doing capex since 2015. तो अब से मतलब आप 200 करोड़ से 400 करोड़ पहुंच गए, और कितना पैसा लगा?
नहीं सर, कुछ भी, ओनली वर्किंग कैपिटल, और बाकी तो कोई नया कैपेक्स किया ही नहीं। वेरी नाइस। एंड आपकी इन्वेंट्री पहले 200 करोड़ पे कितनी थी और 400 करोड़ पे कितनी है? So I don't have the exact numbers now, but I think green में है। That's all I can say कि अब green में है inventory। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस, एक्सीलेंट, गुड गुड गुड। ओके, एंड राइट नाउ ऑपरेशंस में हाउ मच टाइम डू यू इन्वेस्ट? Monday and half day of Tuesday till my PC meeting typically happens 2 to 3 on Tuesday, so till 3 o'clock I would say। बाद में कोई आना चाहता है, मिलना चाहता है Tuesday को, तो मैं मिल लेता हूँ। बाकी Wednesday to Saturday I avoid, completely avoid। वेरी नाइस। एंड चलो ठीक है, इट्स 11:30 now. You said that 11:30 you have to exit, you have another meeting. So great, thank you so much. Ladies and gentlemen, can we all unmute and thank Alok? Thank you, sir. Thank you, मजा आ Alok गया, जी। मजा आ Alok गया। जी, Thank you, sir. Thank you. Thank you, Alok ji. Thank you, Nando, please. Thank you, Alok ji. Thank you so much, Alok ji. Wish you all the best. Thank you, Alok Thank you, Alok ji. Thank you for the nice you. sharing. Thank you ji, thank you. Thank you, Alok ji. Yours, Thank you, thank you, हमारा yours, yours is next level. Okay, अब इसको बंद कर देते हैं। आलोक, would you